हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। हम आज के सेशन में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पेपर जो कि सेकंड टर्म में आया है उसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 2 मार्क्स के थे, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 3 मार्क्स के थे और क्वेश्चन नंबर्स 9 to 12 5 मार्क्स के थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, it was estimating manpower requirements is not merely knowing how many persons we need. What else is needed while estimating manpower requirements? State any 2 points. अब बेटा मैन पावर रिक्वायरमेंट देख के ही हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो स्टाफिंग से है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। आंसर हमें इसका पेज नंबर 142 बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 एनसीईआरटी में दिख जाएगा। Here is the extract of that NCERT. The expected answer is understanding the manpower requirement would necessitate workload analysis on one hand and workforce analysis on the other. तो हमें workload analysis और workforce analysis की explanation देनी थी और ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क का था। Next question, question number 2. It says, due to various malpractices and multiplied investor grievances, the government of India decided to set up a separate regulatory body to protect the interest of investors and to regulate the security market. Identify the regulatory body set up by government of India for the above said purpose. State any one objective of the regulatory body identified in A above. अब ये क्वेश्चन हमें पता चल गया कि ये फाइनेंशियल मार्केट का है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात की जा रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की है, जो कि ये चेक करेगी कि स्टॉक मार्केट में कोई माल प्रैक्टिस ना हो रही हो। इसका आंसर हमें पेज नंबर 275 बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक में एज इट इज मिलेगा। अब देखिए ये एक्सट्रैक्ट है बुक में से, इसकी लास्ट लाइन आप देखिए, इसमें लिखा है ना, इन द व्यू ऑफ द अबव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि मुझे सेबी के बारे में बताना है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कोई भी एक ऑब्जेक्टिव हमने इसके आंसर में लिखना है। So the expected answer, the overall objective of SEBI is to protect the investor and promote the development of and regulate the security market. This will be elaborated as follows. पहला objective, regulate stock exchange and securities industry to promote their orderly functioning. Second, protect the right and interest of investors, particularly individual investors, and to guide and educate them. Third objective, to prevent trading malpractices and achieve the balance between self-regulation of security industry and its statutory regulation. Or fourth objective, to regulate and develop a code of conduct and fairly practice of intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. इन 4 ऑब्जेक्टिव में से आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। Third question, external sources of recruitment may lead to dissatisfaction and frustration among existing employees. They may feel that their chance of promotion are reduced. Give 2 situations when external sources may be used without dissatisfying the existing employees. Sources of recruitment का क्वेश्चन है, पढ़ती समझ में आ गया, ये स्टाफिंग का है, ये क्वेश्चन 2 मार्क का आया है। इसका आंसर हमें पेज नंबर 157 बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 एनसीईआरटी में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा, जहां पर एक्सटर्नल सोर्सेज और उसकी लिमिटेशंस के बारे में मेंशन किया गया है। अब मुझे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये बताना है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां एक्सटर्नल सोर्सेज हम यूज कर सकें, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम यूज कर सकें विदाउट सेटिस्फाइंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। So the expected answer is the 2 situations when external sources may be used without dissatisfying the existing employees are as follows. First,
An enterprise has to tap external sources for various positions because all the vacancies cannot be filled through internal recruitment. देखिए, जब हम सारी वैकेंसीज को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से फिल नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा. तो एक्सिस्टिंग स्टाफ में भी इनसफिशिएंट, हमारे पास इतने लोग ही नहीं हैं कि हम उस वैकेंसी को फिल इन कर सकें, या जो लोग हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते. तो ऐसी सिचुएशन में विदाउट सेटिस्फाइंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज वी कैन गो फॉर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. द सेकेंड सिचुएशन कुड बी a new enterprise cannot use internal source of recruitment. No organization can fill all its vacancies from internal sources. This is one of the limitation of internal sources of recruitment कि हम न्यू एंटरप्राइज जो फॉर्म होती है उसके अंदर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज ही नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. एंड this answer was any 2 points, or these 2 points are for 2 marks. Next, question number 4. The final step in controlling process is taking corrective action, but when deviations are within the acceptable limit, no corrective action is required. When and why corrective action is required, state. Again, फाइनल स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग. क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये कंट्रोलिंग चैप्टर में से है. इसकी वेटेज 2 मार्क्स है. इसका आंसर अगेन हमें एक जगह नहीं मिलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा. पेज नंबर 214, 15 एंड 16 बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 एनसीईआरटी में आपको इसका आंसर मिलेगा फ्रॉम दी सब हेडिंग्स क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अब क्वेश्चन में उन्होंने 2 बातें पूछी हैं. द एक्सपेक्टेड आंसर इज, जो फर्स्ट उन्होंने बात पूछी कि व्हेन करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड. करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड कब है, ऐसा क्या हो कि करेक्टिव एक्शन हमें लेना पड़े. When the deviations go beyond the acceptable range, especially in important areas, it demands immediate managerial attention so that deviations do not occur again and standards are accomplished. यानी कि जब deviations acceptable limit, इंपॉर्टेंट एरियाज में एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर चली जाए तो हमें करेक्टिव एक्शन लेना है. इफ एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल, आपका एक टाइम है, फ्रेम है, अगर हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल पे रन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. When defective material, defective or obsolete machine is used, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना है कि आप उस मशीनरी को रिप्लेस कर दें because the work will suffer. And when defective process or physical condition of work is prevalent in the organization, again you have to take a corrective action कि आप उस defective process या physical condition जो कि organization में है उसको correct करें. Second part था why corrective action is required. जरूरत ही क्यों है corrective action लेने की. In order to better utilize managerial talent, critical problem which need timely action to keep the organization in right track should be identified. If anything goes wrong on the critical point, the entire organization suffer. करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर क्रिटिकल एरियाज में, क्रिटिकल पॉइंट में अगर कुछ गलत हुआ और टाइमली एक्शन हमने नहीं लिया तो सारी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी. Second point could be, in order to save time and to bring efficiency in management, only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought into the notice of the management. ये question 2 mark का था. You may write any 1 point from this section when corrective action is required, and any 1 point from among these 2 points that why corrective action is required. अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Agrima, Arunima and Avika are pursuing MBA from a reputed institution. Now it is a time of their placement. Agrima wants to work in a company which would provide her more authority for fulfilling her duties and give recognition, reward, perquisite and prestige of job. अब देखिए इसके अंदर जो कीवर्ड है मुझे आंसर को जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा वो क्या है. गिव रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, perquisite and prestige of job.
Next, Arunima wants to work in an organization in which behavior of individuals is influenced by characteristics like autonomy, reward orientation, consideration of employees' risk taking, etc. Again, इसके अंदर जो की phrases या की words हैं जो कि मुझे आंसर को ढूंढने में हेल्प करेंगे, वो क्या है? Characteristics like autonomy, reward orientation, consideration of employees' risk taking. Avika wants to join an organization which has appropriate skill development program and sound promotion policy that encourages employee to exhibit improved performance. तो इसके अंदर again appropriate skill development program and sound promotion policy, ये दो की phrases हैं जो कि मुझे हेल्प करेंगे कि इसका आंसर क्या है उसको ढूंढने में. अब क्वेश्चन क्या है? दैट आइडेंटिफाई एंड स्टेट द इंसेंटिव्स अबाउट द एग्रीमेंट अग्रिमा, अरुणिमा एंड अविका आर टॉकिंग अबाउट. अब बेटे इंसेंटिव्स की बात की जा रही है, तो मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन डायरेक्टिंग चैप्टर में से है, 3 मार्क्स का है, और जो सब हेडिंग है वो है, सब टॉपिक वो है मोटिवेशन, और हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसका आंसर हमें पेज नंबर 186, 87 डायरेक्टिंग चैप्टर फ्रॉम द बुक बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 एनसीईआरटी से मिल जाएगा. अब देखिए पहली जो बात हो रही है, देखिए फर्स्ट जो अग्रिमा बात कर रही है, wants to work in a company that gives recognition, reward, perquisite and prestige of job. So इसका मतलब क्या है कि वो she wants status, है ना? See the line. It's given in NCERT under the head status. The authority, responsibility, reward, recognition, perquisite and prestige of job indicate the status given to a person. सेकेंड जो अरुणिमा बात कर रही है वो बात कर रही है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की. अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड, ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज एटसेट्रा. सो ये देखिए ये सेम लाइन क्वेश्चन में दी हुई है. सो सेकेंड में हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं. थर्ड, अविका क्या चाह रही है? अविका जा रही है दैट एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. नाउ these lines or phrases you may find under the head career advancement opportunity. See, appropriate skill development program and sound promotion policy will help employee to achieve promotions. So ये question 3 mark का था और हमें non financial incentives identify करने थे. So expected answer, Agrima is talking about status, Arunima is talking about organizational climate, and Avika is talking about career advancement opportunities. Next question, question number 6. State any 3 points of importance of controlling function of management. अब इस question में internal choice थी. State any 3 points of importance of directing function of management. पहला पार्ट कंट्रोलिंग चैप्टर में से, दूसरा पार्ट डायरेक्टिंग चैप्टर में से है. 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस मेंशन करने हैं एंड वी कैन फाइंड द आंसर on page number 208, page number 175 from the business studies part 1 NCERT book. और हमें पता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग सेक्शंस में हमें इसके आंसर मिल जाएंगे. सो द एक्सपेक्टेड आंसर इज importance of controlling. I'm just mentioning the points और आपको इसको 1 या 2 लाइन में अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Importance of controlling: accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, making efficient use of resources, improving employee motivation, ensuring order and discipline, facilitating coordination in action. And see, among out of these 6 points of importance, you may write any 3 with brief explanation as it is of 3 marks. Then importance of directing. Directing helps to initiate action by people, integrates employee efforts in the organization, guides employee to realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership. Directing facilitates introduction of needed change in the organization, and effective directing helps to bring stability and balance. These are 5 points of importance of directing. You may write any 3 with brief explanation. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
Next question, question number 7. Explain private placement and right issues as method of flotation of new issue in the primary market. अब मुझे पता चल गया प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से लिया गया है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे पेज नंबर 263, 64 फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 एनसीईआरटी में एज इट इज स्ट्रेट अवे अवेलेबल है, जहां पर हमें दिए हुए हैं मेथड्स ऑफ इशूइंग और फ्लोटिंग न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट। सो हमें स्ट्रेट अवे इसके आंसर प्राइवेट प्लेसमेंट is the allotment of securities by a company to institutional investors and some selected individuals, helps to raise capital more quickly than public issue. Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Some companies therefore cannot afford the public issue and choose to use private placement. और right issue दिया जाता है existing shareholders को, और उनको ये राइट दिया जाता है that they can subscribe to the new issue of shares according to the terms and conditions of the company. उनको पहले ही राइट दिया जाता है कि जब एडिशनल कैपिटल कंपनी रेज कर रही है तो दे हैव गॉट अ राइट दैट दे कैन बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, न्यू शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन proportion to the number of shares they already possess. So this question was of 3 marks, so 1.5 mark for the explanation of each point. Next question, question number 8. Name and give the meaning of concepts that are highlighted in the following statements. First, it improves the performance of employee on the current job and prepares them for any intended job. Second, it not only improves the job performance of employee but also bring about growth of personality. अब देखिए बेटे, ये जो जिन concepts के बारे में बात की जा रही है ये आपको पता चल गया। देखो, improves the performance of employee on current job, यानी कि उसकी स्किल इंप्रूव करने की बात की जा रही है, तो वो होती है ट्रेनिंग से। और यहाँ पर बी पार्ट में बात की जा रही है इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय बट ऑल्सो ब्रिंग द ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि ये बात की जा रही है डेवलपमेंट की। तो ये क्वेश्चन स्टाफिंग चैप्टर से है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसका हमें आंसर पेज नंबर 163 स्टाफिंग चैप्टर में बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 एनसीईआरटी पे easily available है। That means we are talking about training and your development. आप देखिए ये आपको सेम लाइंस इस एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगी। ट्रेनिंग में इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. It attempts to improve the performance on the current job and prepare them for any intended job. देखिए सेम लाइन इस क्वेश्चन में कोट की गई है। डेवलपमेंट में development refers to learning opportunities designed to help employees to grow. It covers not only those activities which improve job performance, but also those which bring about growth of the personality. You see the same line. So I think straightforward question, straightforward answer. अगर हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। So training is any process by which the aptitude, skills and ability of employees to perform a specific job are increased. It's a process of learning new skills, application and knowledge. Development refers to learning opportunities designed to help employees grow. You can go through the second point on your own, and since it's of 3 marks, so 1.5 mark for identifying an explanation of the first part, that is training, and 1.5 mark for identification and explanation of development. Now let's move to the next section. Question number 9. Question number 9 says, explain the following rights of a consumer as per the provision of Consumer Protection Act 2019. Right to safety and right to be informed. Again a straightforward question. और इस question में choice थी. Second part was state any 5 responsibilities of consumer under Consumer Protection Act 2019. Question को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये Consumer Protection Act चैप्टर में से है। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये।
Page number 248, sorry, 348 or 349 from the chapter Consumer Protection. बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 एनसीईआरटी में इसका आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाएगा, जहां पर सारे कंज्यूमर राइट्स दिए हुए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स दी गई हैं. Now the expected answer of the first part of the question, right to safety. The consumer has a right to be protected against goods and services which are hazardous to health, life and property. For example, if you quote more example in the answers, you will get more marks. Electrical appliances which are manufactured with substandard products or do not conform to the safety norms might cause serious injury. तो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब भी चूज करते हैं, वी आर गोइंग टू लुक फॉर ISI मार्क दैट वुड एश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट्स अ स्पेसिफिक क्वालिटी. Right to be informed. The consumer has a right to have complete information about the product he intends to buy, including its ingredients, date of manufacture, price, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज. और ये मैंडेटरी होता है कि आपने ये सारी चीजें लेबल पे मेंशन करनी होती हैं. ये क्वेश्चन 5 मार्क का था, 2.5 मार्क ईच फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. अब इसके और पार्ट में हमको कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट करनी थी. जो आंसर हमें, इसका आंसर हमें पेज नंबर 350 ऑफ द चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 एनसीईआरटी में एज इट इज हमें मिल जाएगा. You can see the first responsibility of the consumer is be aware about various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. Buy only standardized goods as they provide quality assurance. Learn about the risk associated with product and services. Read labels carefully. Assert yourself to ensure that you get a fair deal. Be honest in your dealings. Ask for cash memo. File a complaint in an appropriate consumer forum in case of shortcoming in the quality of goods purchased or service availed. Form consumer societies which would play an active part in educating consumers. Respect the environment. So out of so many responsibilities, you may write any 5 and the question was of 5 marks. So कोई भी 5 responsibilities आप लिख देंगे, you are going to get full marks. Next question, question number 10. What is meant by financial market? State any 4 functions of financial market. ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट. 5 मार्क्स हैं इसके. You may find the answer of this question on page number 257, 258 from the chapter Financial Market, Business Studies Part 2, NCERT, जहां पर concept of financial market or functions of financial market as it is stated है. So expected answer, meaning of financial market is that it's a market for creation and exchange of financial asset. And financial market exists whenever financial transaction occur. Financial transaction could be in the form of creation of financial asset. जब हम IPO लेकर आते हैं अपना मार्केट में, तो हम फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स, डिबेंचर्स क्रिएट करते हैं. और जब इनकी ट्रेडिंग होती है, that takes place in the secondary market. Fine. So trading, that is purchase and sale of existing financial assets like equity, debentures and bond, takes place in the secondary market where exchange of financial assets takes place. So the meaning is of 1 mark. Then functions of financial market: mobilization of savings and channelizing them into most productive uses. Second function, facilitate price discovery. Third function, provide liquidity to financial asset. And fourth function, reducing the cost of transaction. So ये 4 point ही given है. So 4 points along with their brief explanation, 4 marks. Let's move to the next question. Question number 11, again 5 mark का question है ये. Asha is living in a small village of Rajasthan.
her mother has good culinary skills. Inspired from her mother, she joined the course of food and beverage production in Jaipur. After completing her course, she asked her mother to open a sweet shop in Jaipur, on which her mother agreed. The business was doing well and had started growing. To expand our business, she felt the need of additional personnel. Instead of selecting from any other source, she thought of helping her relatives and appointed 5 of them. But after doing all efforts, she found that none of her relatives were providing satisfactory service, leading to lower productivity. Also, the quality of product started deteriorating. This made Asha to realize that the ability of an organization to achieve its goal depend upon the quality of its human resource. This was ignored by her at the time of selecting personnel for her expansion program. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब बेटा ये तो मुझे देखते ही पता चल गया, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग is the answer, which could have helped at the time of fulfilling her need of additional personnel in the organization. And the second part of the question is state any 3 benefits of the function identified in A above. ये क्वेश्चन स्टाफिंग से है, 5 मार्क का क्वेश्चन है. So meaning of staffing, 2 mark is allotted for this answer. Meaning के लिए, staffing is a part of process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. Putting people on job, it begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce. Now, benefits of staffing are helps in discovering and obtaining competent personnel for various jobs, makes for higher performance by putting right person on right job, ensures continuous survival and growth of the enterprise, helps to ensure optimum utilization of human resources, and lastly, improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair reward for their contribution. So, 5 benefits of staffing are given. You may write any 3 with explanation, 3 marks. This particular portion, second part of the question, is of 3 marks. The last question. Ananta Limited is a company dealing in ready-made garments from last many years. Recently, the profit of the company has started increasing. The finance manager decided to retain profit instead of distributing it among shareholders. Identify and state the financial decision taken by finance manager in above case, and we have to state any 3 factors affecting the decisions identified in 1 above. तो बेटा ये क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल गया कि ये बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसका आंसर मुझे पेज नंबर 236-37 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 एनसीईआरटी में मिल जाएगा. जहां पर देखिए बेटा, आप क्वेश्चन में हमको ये दिख रहा है, द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड टू रिटेन प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग शेयर होल्डर्स. तो यानी कि जो फाइनेंशियल डिसीजन की बात की जा रही है वो है डिविडेंड डिसीजन. और डिविडेंड डिसीजंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 237. So the expected answer is meaning of dividend decisions. The financial decision taken by a finance manager is dividend decisions. Dividend is that portion of profit which is distributed to shareholders. The decision involved here is how much of the profit earned by the company after paying tax is to be distributed to the shareholders, and how much of it should be retained in the business for further reinvestment purpose. आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस डिसीजन और इसका मीनिंग, ये 2 मार्क्स का. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस आर अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स,
growth opportunities, cash flow positions, shareholders' preference, taxation policy, stock market reaction, access to capital market, legal constraints and contractual constraints. हम इसमें से कोई भी 3 points with explanation आंसर में लिख सकते हैं, and each point along with explanation is of 1 mark each. So 3 points, 3 marks for this particular part of the answer. Question number 12 में internal choice थी, और जो choice का question था that was, again it's a case study. Ravi has joined as a finance manager in MTA Limited. He had to arrange funds of rupees 1 crore for company. The chief executive officer of the company wants to arrange the funds by a public issue, whereas the finance manager wants to have a mix of debt and equity, as this will determine the overall cost of capital and financial risk of the enterprise. ये की phrase हमारे जो last line में है, ये मुझे आंसर की तरफ डायरेक्ट करेगा. तो क्वेश्चन क्या है, पहले आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन सजेस्टेड बाय फाइनेंस मैनेजर इन द अबव केस एंड स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजंस which you have identified in part 1. This question is again from financial management business finance 5 marks, और हम इसका आंसर कहाँ पे देख सकते हैं, पेज नंबर 234, 35 and 36 of this chapter financial management business studies part 2 NCERT. अब देखिए बेटा, इसके अंदर जो लिखा है कि finance manager wants to have a mix of debt and equity, as this will determine the overall cost of capital and financial risk of the enterprise. ये हमारा ये लाइन हमें डायरेक्ट कर रही है that the financial manager is talking about the financing decision. So the expected answer is meaning of financing decision. जो financial decision suggested by the finance manager is financing decision. Meaning is this decision is about quantum of finance to be raised from various long-term sources. It involves identification of various available sources. Firm has to decide proportion of funds to be raised from either of the sources based upon their characteristics. Identification of this decision and its meaning, this is of 2 marks. And the last part of this question is that we have to state and explain the factors which are affecting the financing decisions. So here they are: cost, risk, flotation cost, cash flow position of the company, level of operating cost, control considerations, and state of capital market. So out of these factors, you may choose any 3 factors. कोई भी 3 factors along with this explanation will be the answer, and these stating and explaining the meaning of these factors will be of 3 marks. So that's all for today from my side in this session. Hope you have liked this. If you have any suggestion or comments, you may comment in the comment box. That's all for today from my side. Thank you very much.